Okay, hello and welcome to this wonderful new series called Mulchand Health Talks in partnership with Famhealth. The aim of this series is to empower you with relevant and scientific information on disease, conditions, procedures, and treatment in simple and easy language by the top doctors of India and the world. Today, as a part of this series, our topic is 3D laparoscopic surgery and hernia care. Our specialist expert on this today is Dr. Sachin Ambekar, who is a consultant minimal access and bariatric surgeon and a specialist in 3D laparoscopy. In fact, one of the three only in Delhi NCR to perform this kind of surgery. And he's a specialist in all hernia surgeries and is attached to Mulchand Hospitals, New Delhi. Dr. Ambekar, thank you so much for being with us today. Thank you, Shari. Thank you for inviting me on this platform yet again. It's always a pleasure. Yeah, and I would like to, in fact, hear your opinion. Mulchand and Famhealth have come together with this beautiful series. In fact, today is just the second of the series that we began last week. Many more to come. How do you think it is going to be for the viewers in the audience? What do you think should be discussed in these talks? First, I think, firstly, it's commendable that you're using the media platform, the social media platform, to reach out to the masses. And as you know, today, it's a very funny statistic. The most mobiles sold all over the world is in India. The communication is the highest in India. So I think everybody's connected to somebody or the other. And I think this platform, where patients who are far-flung areas or in different states or even in different countries would be able to reach out to these common dilemmas, common problems, health problems, which we all face, but we are either too embarrassed to ask, or we do not have the right source to get the correct answers through. So Famhealth is, I think, the perfect platform for such awareness to be spread all over the world, the country, outside, international, so that we can reach out to each and every one, and we can, in pleasant and simple terms, tell them about surgical advances, which probably only maybe the urban few could manage to hear about. Yeah. So absolutely. I think the reach out program is wonderful, and I think this series should continue forever with most of the doctors linking into it. Thank you so much, and really like a heartfelt thank you to Mulchand Hospitals and you in particular, Doc, for sparing time today. Because we know that always doctors have such a tight schedule with so many patients always waiting. But this is important too, like you said. Going to now towards what we are discussing today, Doc, 3D laparoscopic surgery and hernia care is the larger topic we're discussing. But coming to laparoscopic surgery specifically, what exactly does 3D laparoscopic surgery do differently from what we have heard conventionally of laparoscopic surgery? Right, so it has a twofold answer. So basically, laparoscopy, या हिंदी में इसे दूरबीन operation कहते हैं. So it's a minimal access surgery. So these are called keyhole surgeries. So basically, जो पुराने ज़माने में लंबे 10-12 इंच के कट लगते थे बॉडी पे, अब वो नहीं होते हैं. So we use just a millimeter cut in the body. We insert ports and we do these laparoscopic surgeries in the abdomen. So over the period of time, surgeries have evolved, diseases have evolved, all kinds of complications have evolved. And at the end of it, one mainstay which has never changed is the basic patient safety. कहने का मतलब ये है कि operations advance हो गई हैं, बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी हैं जो हम देखते हैं, but जो नहीं बदला है वो है patient care और patient safety. इस मायने में 3D laparoscopy is one of the most advanced surgeries throughout the world. जैसे हम 3D movies देखते हैं थिएटर में, चश्मा लगा के 3-dimensional view मिलता है, उसी प्रकार surgeries में भी 3-dimensional view अब surgeons को भी मिलता है. एक बाइनोकुलर विजन, जो एक दूरबीन विजन हम बोलते हैं, जिसे एक डेप्थ मिलता है, उसे हम 3D लैप्रोस्कोपी कहते हैं. 3D लैप्रोस्कोपी से जो ऑपरेशंस एक एवरेज सर्जन 1 घंटे में करता है, हम 3D लैप्रोस्कोपी में 25 से 40 मिनट के अंदर ऑपरेशन खत्म कर देते हैं. इससे ये फायदा होता है कि पेशेंट्स जो हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस हम भरते हैं पेट में ऑपरेशन करने के लिए, वो मात्रा बहुत कम हो जाती है. और पेशेंट्स
3 या 4 घंटे में उठ के चल सकते हैं। और कई सारे पेशेंट्स हमारे जो हैं डे केयर सर्जरीज हम करते हैं इस 3D लैप्रोस्कोपी से, तो वो मोस्टली 4 या 5 बजे तक घर भी चले जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मिनिमल स्टे, minimal access, minimal scar, minimal time. That is what 3D laparoscopy is all about. कि 3D laparoscopy में जो विजन सर्जन को मिलता है, उससे सर्जरी का टाइम काफी हद तक घट जाता है। जो डेप्थ, जो एनाटॉमी है, परसेप्शन है, वो दिख जाता है। और ऑब्वियसली इसका मतलब ये भी होगा कि पेशेंट उतने ही जल्दी रिकवरी मोड पे जा सकता है, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। एवरीथिंग इज हेस्टेंड अप, राइट? डॉक, उस बारे में बात करने से पहले जरा ये बताइए कि ये वाली जो सर्जरी है, ये कौन से कंडीशंस या डिजीजेस के लिए एप्लीकेबल है? कौन कौन करवा सकता है ये इस टाइप की सर्जरी? बेसिकली 3D लैप्रोस्कोपी सर्जन के एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो सर्जन उस 3D लैप्रोस्कोपी से क्या क्या सर्जरीज करवा सकते हैं। जैसे हम एक्चुअली रोबोटिक सर्जरीज भी सुनते हैं, तो रोबोटिक सर्जन भी वही सर्जन करते हैं जो आम सर्जन करते हैं, बट उनका एक्सपर्ट या उनकी एक्सपर्टीज पे निर्भर होता है कि वो सर्जरीज उस मुकाम तक ले आ सकते हैं कि वो 3D या रोबोटिक। सो बेसिकली ऑल एब्डोमिनल सर्जरीज, गॉल ब्लैडर्स, कॉम्प्लेक्स हर्नियाज, अपेंडिसाइटिस, you can do pelvic surgeries, hysterectomies, ये सारी चीजें आप 3D लैप्रोस्कोपी के द्वारा कर सकते हैं। और बहुत ही कम समय में अगर आपका एक्सपर्टीज हो तो, फॉर एग्जांपल, जैसे एक लैप्रोस्कोपिक 2 डायमेंशनल गॉल ब्लैडर सर्जरी, एवरेज सर्जन अगर उसका हाथ या स्किल अच्छा हो तो 45 से 50 मिनट के अंदर ये खत्म कर। वेरएज 3D लैप्रोस्कोपीज में मैं जो गॉल ब्लैडर सर्जरीज करता हूँ वो 25 से 28 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है, जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो हम उनको डील करते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस की तरह, बट एन एवरेज सर्जरी वुड बिटवीन 28 to 30 मिनट्स। और पेशेंट अगर हम 8:30 बजे ओटी में लेते हैं तो 9 बजे पेशेंट बाहर हो जाता है ओटी कॉम्प्लेक्स से बाहर और रिकवरी रूम में आ जाता है। आप थोड़ी देर पहले हमसे जब वन ऑन वन बात कर रहे थे, आपने कहा कि शुरुआत में ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली और गर्भ रिलेटेड जो जो इश्यूज हैं और लोअर पेल्विक में जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड शुरू की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। एंड नाउ आर दोज स्टिल इन्वॉल्व्ड इन ट्रीटिंग दोज एज वेल? Yes, so the advent of 3D laparoscopy was started for pelvic surgeries. जो बच्चेदानी निकालने के लिए laparoscopic surgeries यूज करते थे सर्जन। तो बेसिकली 3D laparoscopy उस डेप्थ को दिखाने के लिए, उस कोशिश के लिए, उस अनुभव को बढ़ाने के लिए, ताकि कम से कम समय लगे, कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हो, कम से कम ब्लीडिंग हो, उसके लिए ये इन्वेंट किया गया था 3D laparoscopy pelvic सर्जरीज के। तो बच्चेदानी रिमूवल, हिस्टेरेक्टमीज, पॉलिप रिमूवल्स, ओवेरियन सिस्टेक्टमीज, इसके लिए ये जो 3D लैप्रोस्कोपी है, जो विजन आती है, बाइनोकुलर विजन, उससे जो डेप्थ मिलता है, वो सर्जरीज बहुत कम समय में खत्म हो जाती है। तो बेसिकली दिस वाज अ हेल्प फॉर द गायनेकोलॉजी, बट इट देन ओवरटुक एंड वी गॉट इट इनटू द मेल डोमेन फॉर एब्डोमिनल सर्जरीज। हर्निया के लिए, अपेंडिक्स के लिए हमने इसमें शुरुआत की थी, और इनमें फिर हमने स्टडीज और फिर हमने रिसर्च और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग्स हमने ली हैं, तब जाके फिर हम ये सर्जरीज आम सर्जरीज के लिए भी यूज कर पा। डॉक्टर अंबेकर, हर सर्जरी में कुछ तो रिस्क होता ही है। जी however, I'm sure with this kind of surgery the benefits outweigh the risks. But even then, हमारे viewers को बताने के लिए क्या रिस्क हो सकती है 3D laparoscopic सर्जरी में? जी, मैं सबको यही बताता हूँ। बेसिकली अगर आप गाड़ी में ट्रैवल करती हैं, तो अगर आप गाड़ी चलाती हैं तो आप आगे देख के और पीछे और साइड मिरर व्यू देख के आप गाड़ी चलाती हैं। हालांकि एक्सीडेंट्स तब भी होते हैं कि कोई गलत सड़क से आ गया, उसने गाड़ी मारी है, सो दीज आर कैलकुलेटेड रिस्क। उसी प्रकार सर्जरी इज ऑल्सो गॉट कैलकुलेटेड रिस्क, जो हर सर्जरी में। इट्स नॉट ओनली 3D, नॉर्मल लैप्रोस्कोपी, नॉर्मल सर्जरीज में जो ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें नॉर्मल सर्जरी से 3D लैप्रोस्कोपी सर्जरीज में भी आती हैं। बट 3D लैप्रोस्कोपी में ये जो रिस्क हैं, इनका जो परसेंटेज है, वो बहुत कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द डेप्थ इन एनालिसिस। और एज आई सेड अगेन, वो ड्राइवर पे डिपेंड है कि वो गाड़ी कैसे चला रहा है। तो आई थिंक इट इज अ वेरी सर्जिकल क्वेश्चन कि हर सर्जन का एक्सपर्टीज किस प्रकार का है, ताकि वो रिस्क कम करें और 3D लैप्रोस्कोपी यूज करें। बट एज एन आउटवर्ड यूजर ऑफ 3D लैप्रोस्कोपी, आई एम नॉट फाउंड that it has given a more amount of risk to any patient, rather it has
culminated in effect where the risk is much less as compared to the conventional surgeries. Also, Doc, what are the kind of patients who are best suited for this? क्या बहुत उनका जो condition है अगर बहुत आगे बढ़ गया है और severe हो चुका है, would you not advise it? So, who is the best suited for this kind of a surgery? So again, the best judge for the 3D laparoscopy is the surgeon, because the diseases are complex and they're not same in every patient. The disease categorically could be the same as the name, but the presentation would be all different in all different patients. All 10 patients would be different. So the 3D laparoscopy, the choice is on the surgeon, whether he'll be able to use it for a complicated case or a surgical case. As in such, there is no contraindication per se for a 3D laparoscopy कि इस patient में हम 3D laparoscopy नहीं कर सकते हैं. और 3D लैप्रोस्कोपी का सबसे बड़ा एक फायदा है जो हम कैमरा यूज करते हैं. अगर किसी वक्त हमें लगा कि 3D लैप्रोस्कोपी में हम वो जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, तो एक स्विच ऑफ द बटन से वो 2D लैप्रोस्कोपी में भी कन्वर्ट हो जाता है. Oh, nice. Okay. Okay. तो So while it again going on, you can actually quickly. Yes, you can change the mode by a switch of the button, so you don't have to stop the surgery or do anything. And I think it again depends, as I think it's a moderator dependent usage. So the question arises that it is the choice of the surgeon how he is performing well on the 2D or the 3D. So, Dr. Ambekar, since this is like the minimally invasive surgery, I'm guessing कि blood का loss भी कम होता है. जी. तो क्या diabetes patients and heart related patients जो surgery के लिए आ रहे हैं, उनको भी ये recommended है, और would they still be going for conventional surgeries? जी, ऐसा होता है कि जो भी आप डिजीजेस लेके आते हैं, जिनके पास कोमॉर्बिडिटीज हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, किसी की हार्ट पे स्टेंट है, किसी को दमे की शिकायत है, चाहे आप कन्वेंशनल सर्जरीज करें या लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज करें या 3D लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज करें, इसका सारा दायित्व या उत्तरदायित्व जो डिपेंड होता है वो होता है एनेस्थीसिया टीम पे. जैसे हम प्री एनेस्थीसिया चेकअप जब करवाते हैं पेशेंट का, तो वो हमें बता पाते हैं कि ये पेशेंट फिट है सर्जरी के लिए, जनरल एनेस्थीसिया के लिए, कितने टाइम के लिए, कितने प्रोलॉन्ग के लिए. हम काफी पेशेंट्स जो हैं लैप्रोस्कोपी जो करते हैं, तो काफी मेरे पेशेंट्स आज के जमाने में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैव सम प्रॉब्लम्स और द अदर, आइदर ब्लड प्रेशर, बी इट डायबिटीज और asthma, पोस्ट कोविड सिम्टम्स, lungs. So we have all kinds of patients in these, paraphernalia. But again, if the anesthesia team is comfortable to give the general anesthesia, we prefer doing a laparoscopic surgery. So the only contraindication comes if the disease interferes with the anesthesia. और एनेस्थीसिया के वक्त हमें लगा कि ये जनरल एनेस्थीसिया 1-1.5 घंटे सहन नहीं कर पाते हैं या पेट के लिए प्रेशर बढ़ता है, तो हम कन्वेंशनल ओपन सर्जरीज करते हैं ऐसे पेशेंट्स को. But इनका percentage काफी कम है, probably a 1 or 2 percentile in the whole population. Because with the advancement of the drugs and the team and technology, we can manage most of the complicated cases as well. Also, Dr. Ambekar, जब कोई आता है आपके पास पहले कंसल्ट के लिए to talk about this and when you're recommending it to them, उनको अपने लिए क्या-क्या प्लानिंग करके आनी पड़ती है? Like you said, you probably ask them कि उसी दिन आप जा सकते हैं घर जाके अगर किसी के पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है and you are either taking care of elderly or children, etc. Yeah, correct. So what does that what are the implications of that? So the question which you've said is very pertinent, especially in our Indian scenario in the urban society. Earlier there was a joint family. Aajkal though it's just a single mother, brother, maybe a husband, wife, and a kid. That's about it. So most of them, when they come for surgeries, obviously they're apprehensive of the surgical part. और दूसरा कि आगे क्या होगा, कि इसको हमें कितनी दिन रेस्ट करना पड़ेगा, बेड रेस्ट कितना है, क्या परहेजें हैं. So basically, as I said, with the advent of 3D laparoscopy, the stay is less. तो उस प्रकार से जनरली जितने मेरे पेशेंट्स हैं जिन्हें हम उनको हिदायतें भी देते हैं, तो बेसिकली एक दिन का जो स्टे होता है, अगर वो रुक सकते हैं तो वो एक दिन रुक जाए, नहीं रुक पाते तो घर भी चले जाते हैं. उस दिन उनको केवल लिक्विड डाइट पीना, बेसिकली लिक्विड डाइट, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया गया है, तो अगर हैवी फूड होंगी तो उल्टियां होंगी. तो अगले दिन से नॉर्मल खाना, अगले दिन से वो नहा सकते हैं, अगले दिन से वो सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, अपना बाहर घूम सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं. केवल कुछ सर्जरीज जिसमें हर्निया है, मेश लग रही है, कॉम्प्लेक्स है, उनमें हम एक हफ्ते का एक वो टाइम फ्रेम दे देते हैं कि कोई पेट के एक्सरसाइज ना करे, बाकी सब कर सकते.
हम इनफैक्ट हर्निया की बातें अब हम शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं गुंजन चौधरी जी। गुंजन जी इनफैक्ट रिसेंटली ही उन्होंने सर्जरी करवाई है, एंड शी इज राइट हियर विद अस। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हर। गुंजन, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, वीड लव टू हियर फ्रॉम यू। आपने अभी रिसेंटली ही सर्जरी कराई है, and what is it that you came with, what did you go through? Please let our viewers know आपके साथ ये कैसा रहा एक्सपीरियंस। Hi Gunjan, how are you? I'm good, sir. How are Nice to you? see you. I'm good. Nice to see you. Thank you so much for the surgery because I'm feeling very well now. And Welcome. I recently had my 3D laparoscopy surgery from sir only, from Mulchan Hospital. And my surgery was done on 9th of April, approximately 13 to 14 days ago. And today I am very well. I have no pains and I can walk freely and without any pains. I can hold my baby also. But initially, I used to have a lot of excruciating pain since January, and I had multiple of episodes where the pain was getting very intense by each passing day. Whenever I used to eat something, I had that trauma that कि वो रात के टाइम में मेरे को पेन स्टार्ट होता था, and I used to had all of the dreams, और मैं चेक करती थी गूगल पे कि ये चीज हमेशा मेरे रात में क्यों शुरू होती है, दैट द पेन दैट आई यूज्ड टू हैव वाज ओनली इन द मिडनाइट. So I thought that something I ate must be not responding to my stomach. That's why, or it could be due to my surgery that I had because of my baby due to the C-section. क्योंकि उसके बारे में भी बहुत लोग बोलते हैं कि आपने सी सेक कराया, दैट कुड बी ऑल्सो द रीजन कि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, या फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ गई है, या इंटेंसिटी आपकी बढ़ गई है. So by each passing day, the frequency and the intensity of my pain was very increasing day by day. Now, one day when I ate something in the day and the pain started to increase by the passing hour. तो वो मुझे ऐसा लगा कि करते 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 वो शाम तक इतना ज्यादा बढ़ गया मेरे को that I had to go to Mulchan Hospital. I asked my husband to meet with to go to any hospital that is nearby and get it done with it, because the pain was so excruciating. I was not able to hold it anymore. Then I think that was 2:30 something, and we went to Mulchan Hospital, the emergency ward. And the doctor, when I was talking to the doctor said that how much pain you are experiencing, and कब से हो रहा है, what is the time duration, and कितनी frequently होता है आपको, क्या इसी तरीके का pain होता है. Then I told everything to him, and the first thing that he came up with was that the amount of pain that you are telling me, वो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, दैट कुड बी द स्टोन प्रॉब्लम. So Gunjan, before that, did you know that you had gallbladder stones? No, I did not know about it. Even I had my baby 1 year ago. I had multiple of times this ultrasounds, but that was not detected in that time also. So I did not know. I thought that I was perfectly fine. I had no stones in liver or gallbladder or something like that. Then after that, he wrote some tests, and he gave me medicines, and I got relieved because he gave me painkillers, and I went home. After that, after a few 2 to 3 weeks later, I get that particular pain again at night only, and I ate something outside food. So I thought that it could be because of junk food that I ate that the pain has started to ooze out again. गुंजन जी, ये जो दर्द होता था ये हमेशा रात के 11 बजे और 5 बजे के बीच में ही होता है? Exactly. I mean, when I met you, you told me that particular thing कि रात में ही होता था, और फिर मैं लिंक कर पाई कि हाँ वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम वो दिन में भी हो सकती है, पर वो जो मुझे पेन होता था वो हमेशा मिडनाइट से शुरू होके 9 o'clock से बढ़ते 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 वो पूरी रात भर मेरे को 4, 4:30, 5 बजे तक रहता था. तो वो पूरा जो ड्यूरेशन होता था वो काफी लंबा मेरा टाइम ड्यूरेशन होता था कि मेरे को पेन रिलीफ नहीं होता. I'm interrupting her here because I just wanted to tell जो हमारे दर्शक हैं, as Gunjan ji has told, the most common symptom of gallbladder stones is pain. और ये हमेशा पेन क्यों 11 बजे और 5 बजे के बीच रात के होता है? क्योंकि जब आप सोते हैं तो जो पोजीशन है गॉल ब्लैडर का, वो जो स्टोन्स है वो हरकत में आती है और फंडस के पास जाके वो अटकने की कोशिश करती हैं, और तभी ये बहुत तीखा दर्द होता है. ऐसे लग रहा है कि किसी ने जिस आपके फेफड़ों के नीचे किसी ने चुभाया या कोई
नाइफ सा जैसा एक चुभन सी सडनली एक्सक्रूसिएटिंग पेन शुरू होता. yes. मतलब ऐसा होता था that I used to tell my husband please punch on my back because I used to have so much pain कि मेरे को back पे punch करो so that I could ooze out my pain और मेरे को थोड़ा सा relief मिले और वो pain relief मिलता था मुझे और मुझे ये समझ नहीं आता था कि gastric के pain में when I had taken all the hands-on medicine which was available at my home, I had taken all of it. उसके बाद में भी मुझे रिलीफ नहीं मिलता था सो दैट वाज द थिंग देन आफ्टर दैट जब वो दोबारा से पेन मुझे हुआ देन माय हस्बैंड टोल्ड मी दैट डोंट डिले इट एंड लेट्स गेट इट डन विद द अल्ट्रासाउंड एंड होपफुली कि स्टोन्स ना हो और लेकिन हमें पता चल जाएगा कि जो पेन बार बार हो रहा है उसका रीजन क्या है कम से कम ये पता चल जाए हमको नेक्स्ट डे वी वेंट टू एनी क्लिनिक एंड फर्स्ट क्लिनिक दैट वाज आवर नियरेस्ट clinic from my house then after that the radiologist which who was diagnosing all the thing she told there and then only that you had multiple of stones so I got to know at that particular moment because of that thing I was having so much pain then the very next day we went to sir and he told us everything about 3D laparoscopy and what were the reasons that could be because of that formation of stones then after that you told us that जो हमारा प्रेगनेंसी का पीरियड है you actually आपने सारी हिस्ट्री हमारी जानी पहले कि कौन कौन सी सर्जरीज हुई है कि नहीं हुई है बेबी कब हुआ है देन आफ्टर यू टोल्ड अस कि प्रेगनेंसी के टाइम में because of the cholesterol level and the hormone change that could be also the reason of the formation of the stone and the amount of stone I have you told us that it is more than 50 so that was devastating to know that I have more than 50 stones because the lady that told us that you have multiple stones there is difference between multiple stones and more than 50 stones so I was devastated at that time then you told us that the only option that I am left with is surgery only and you and I did not know that during the surgery the gallbladder will be removed or the stones will be removed so you told us that 3D laparoscopy the gallbladder will be removed because 0.1 chances will be given if that it could lead to the cancer also to the gallbladder basically what she's trying to say is कि जब भी gallbladder stones होते हैं छोटे हो बड़े हो they all cause complications and different variations कुछ patients को unfortunately एक wrong information या misinformation दिया जाता है कि छोटे हैं अभी कुछ नहीं करे बड़े हैं अभी कुछ तंग नहीं करा नहीं करें but over the period of years and we have done gallbladder biopsies and doing surgeries relatively I found that 1 in 10,000 patients who have just come and done a normal routine gallbladder surgeries the gallbladder biopsy unfortunately has turned out to be cancerous. So the gallbladder stones they erode the part of the gallbladder and 0.1% chance in the population of having gallbladder stones you end up having cancer of the gallbladder which is very very fast spreading cancer. Okay. Yeah, so we decided there and there only that we are going to have the surgery on Saturday after 5 to 6 days because you were very much positive that you are going to do fantastic job about it. You told the procedure very well. Then we went home and told our in-laws about all the things. They were more kind of a skeptical about it. कि एक बार और हम किसी से पूछ लेते हैं. The second thought would be very well. Second opinion. Yeah, second opinion. Then after that, we went to our family doctor and she told that also that you are going to have 3D surgery and there is no other way you are going to remove all the stones without having a surgery. So this is the thing. So she wrote not laparoscopy, 3D laparoscopy she had written it. After that, they were pretty much, convinced and relaxed that it is going to be that surgery only. Because I had a C-sec 1 year ago, so they were more like tensed about it कि एक साल में दो surgeries कराना, how it is going to turn out, and if you are going to have second baby, will there be any problem in the future or not? So they were skeptical about it, and after that, when we met our family doctor also, and I spoke to you, then there was no such complication. But उन्होंने जो मुझे बताया था, उन्होंने बोला था that don't conceive between 7 to 8 months. Get it relaxed and after that you can have
if you are planning, you can have your baby. लेकिन अभी 7 to 8 months, try to ignore it. Then after that, we went there on Saturday at 9 or 10 o'clock. I did not know anything. What what went, and I came out healthy, and now I'm perfectly fine thanks to you, doctor. And I am very lucky to have such a. What? I repeatedly told Gunjan that all my patients walk, and I want you to walk in the evening. You got to walk. Yeah, exactly. The more you walk, the less the pain. Yeah, I was conscious at 2 p.m. or 1 p.m. and my doctor came. Yeah, and you came and you told me that you have to walk at 6 p.m. sharp because I want you on your feet after 4 hours. 4 hours ka aapko rest lena hai, and after that you have to walk. And I did exactly what he told me. She was a good patient. Yeah, thank you so much. After that, even when I went home, खाने से पहले वॉक करना, खाने के बाद वॉक करना, my in-laws were there, उन्होंने खाने पीने का ध्यान दिया. My baby was away from me because they were taking care of her. So it was a smooth process for me, and that's all. I mean, अगर आपको करवाना है laparoscopy and that's the only choice that you are going to have, don't worry. And I have that. अभी मुझे लॉन्ग रन का नहीं पता because it's been only 14-15 days. I am on घर का food only. I am eating घर का food. मैं बाहर You can have a pizza today. Yeah, you told me that day I cut your sutures. You can have your meal, your 2 slices of pizza, but I haven't. So you can. Yeah, but telling it on Facebook Live, you can. I want to ask that question: is diet a very integral part of recovery, or is yes? So initially, for the first 7-8 days, I would always recommend anybody not to have any outside food. Just home cooked meals, roti, dal, sabzi, chawal, everything is allowed. In particular, there are no restrictions on a menu card per se, but anything which causes you trouble, a little bit of gas, leave it for 3-4 days and then start it again. So there are no either restrictions. After about 10 or 12 days, if you want to go out, have something, you can have it. But as I said, there are no per se very hard and fast rules about eating. But yes, if you are a person who has this fetish for having fast foods every time, it might cause a little bit of problem of acidity. But I think once in a while, once in a week, for a healthy diet as well, I think you can go ahead. There's no restrictions. I think there's enough information going around in the world that nobody should be having so much fast food, irrespective. Exactly. I mean, you see what everybody's 30s are diabetics and children are diabetic nowadays. Yeah, correct. मुझे एक और आपसे सवाल पूछना है मुझे कि सर्जरी के बाद आपकी रिकवरी के टाइम पे, स्पेशली इन योर केस, आपका छोटा बेबी है, तो होल्डिंग द बेबी, लिफ्टिंग द बेबी, वॉकिंग अराउंड, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इसमें कितना आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है? हाउ इज दैट बीइंग? See, as I told you, I am living with my in-laws. So I had the opportunity कि उन्होंने मेरे बेबी का ध्यान रखा है. Hello, am I audible to you? Yes, you're audible. For the first 7-8 days, मेरे in-laws ने ही उसको रखा है अपने पास में because my baby was not breastfeeding, so that was not mandatory to me be around her. तो उन्होंने उसका ध्यान रखा है and I was totally resting. The only thing that I was doing was eating food, taking care of myself and walking around. I used to walk a lot after eating food, before eating food, because that was the thing that has to be done because of my sutures. और मैं चाहती थी कि जितनी जल्दी मैं ठीक होंगी उतनी जल्दी मैं अपने बेबी का ध्यान रख सकती हूँ. तो मतलब इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड. चाहे मैं अपने लिए मैं ठीक हूँ, चाहे मैं अपने बेबी के लिए ठीक हूँ, बट द रिकवरी इज वेरी स्पीडी. As I told you, now I can hold her and I can वही डॉक्टर ने मुझको बोला कि ज्यादा हैवी नहीं उठा सकते, तो मैं उसको बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं कैरी करती हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं उसको ले सकती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ दैट शी इज बीइंग वेरी क्रैंकी एंड शी वांट्स मी, तो मैं उसको ले लेती हूँ. ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है. और बस हैवी चीजें मुझे लिफ्ट करने के लिए मना करिए एंड दैट यू कैन इग्नोर फॉर सर्टेन टाइम. अदरवाइज एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग. गुंजन, एक लास्ट सवाल आपसे ये कि स्पेशली विद यू young person, you're starting off, your life is just beginning of sorts. The incision that you have is so minute that it you're used to hearing about surgeries जहाँ पे इतना बड़ा कट होता है और उसके ऊपर ये जो incision किया गया है, ये कितना बड़ा है और आपको कितना दिखा विजिबल है आपके बॉडी पे? I was earlier it was band-aid.
So I did not know how much has been cut out. So I was totally जब मेरे स्टमक में पेन, मतलब ऐसा था कि जिस दिन मेरा सर्जरी भी हुई थी मुझे पता ही नहीं था कि मेरे कितने स्टिचेस हैं. मुझे सिर्फ जहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है जो स्टिच वहां लगा था वो, एंड मेरे जो लंग के पास में जो बीच में इंसिजन हुआ था वो, बस मुझे दो पता थे. नीचे के जो मेरे स्टमक पे लगे थे मुझे पेन भी नहीं था उसमें. अब आई डोंट नो दूसरों को पेन होता है कि नहीं होता, बट मुझे पेन नहीं था. मुझे जब मैंने उसको देखा तब मुझे पता चला कि मेरे एक 4th इंसिजन भी है. देन आफ्टरवर्ड्स मैंने अपने डॉक्टर को ही बताया कि मुझे ऊपर वाले में पेन है, मुझे नीचे वाले में पेन नहीं है. तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली मुझे पेन किलर्स भी दिए, और जो मैं एक दिन मैं वहीं पर ही थी तो फिर उन्होंने उसी के अकॉर्डिंगली मुझे मेडिसिन भी प्रोवाइड करी. आफ्टर दैट जब मैं घर आई, घर पे आने के बाद में भी मेरे पास, मतलब मुझे पता था कि मेरे स्टिचेस हैं, 4 स्टिचेस हैं, मुझे उस चीज का ध्यान रखना है. दैट जब भी मैं बात कर रही हूँ, पर वो जो हमारे जो स्टिचेस के ऊपर वाटर प्रूफ जो सील लगाई जाती है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बैंडेज लगाई जाती है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. यू कैन हैव योर बाथ विदाउट एनी डाउट. फिर भी घर वाले एक बार बोलते हैं कि हाँ उसको फिर भी कवर कर लो, कि बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, इट कुड गेट इन्फेक्शियस, तो इसका ध्यान रखो करके. लेकिन मैंने उस चीज का, मतलब मेरा सील सेट हुआ था तो उसमें भी क्योंकि मूलचंद से हुआ था, सेम बैंडेज ओवर हियर, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ जरूरत नहीं है मेरे को. तो फिर मैंने वही चीज करी. आफ्टर दैट जब मेरा सूचर जब आपका कट करने के लिए मैं गई थी तब मैंने देखा कितना लॉन्ग है, 1 to 2 सेंटीमीटर वो देयर, और वो बहुत ही माइन्यूट था. मतलब नीचे वाला छोटा छोटा था और ऊपर वाला एक साइड में थोड़ा बड़ा था, बाकी इतने इतने, ओनली 1 to 2 centimeters. Okay, very nice, very nice. Very small cuts were there. Excellent. Gunjan, you have been an excellent Thank you so much. person to have come, and I love the way आपने जिस तरीके से डिटेल में सारी चीजें बताई हैं, छोटी से बड़ी चीज. I never knew Gunjan could talk so much. पहले से जब डरी आके खाली 2-3 questions पूछती थी. हाँ, I was traumatized. I told you I was traumatized that I had stones at this early age, and वो मैं आपको उस टाइम ही मैंने बोला था कि मेरा जो मतलब I will be the person who knew that in a room there are 4 to 5 people and I am the person who has one organ less. तो वो जो मेरे अंदर था कि ये अगर मेरा गॉल ब्लैडर निकल जाएगा उसके बाद मेरा क्या होगा, मतलब मैं क्या जंक नहीं खा पाऊंगी, या मैं कैसे मैं नॉर्मल अपना लाइफ जी पाऊंगी, क्या करूंगी मैं क्या नहीं करूंगी. दैट ऑल क्वेश्चन वर सॉर्टेड एंड आई डिड नॉट even dare to or audacity to ask such kind of question to you. और वो ऑटोमेटिकली आपने खुद ही बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप पिज्जा नहीं खा सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि आप बर्गर नहीं खा सकते हो, आप सब खा सकते हो. मतलब यही चीज होती है आपका. आई एम अ बिग टाइम फूडी, सो ये तो मेरा सबसे बड़ा ट्रॉमा था कि मेरा पिज्जा मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती. वो आपने बोल दिया कि सूचा के कटिंग वाले दिन आप सेलिब्रेट करने के लिए 2 पीसेस खा सकते हो. सो आई वाज रिलीव्ड. सो दैट वाज सॉर्टेड. Gunjan, thank you so Thank much. you so much, Gunjan. Time out. Thank you, doctor. Thank you. Your recovery still little bit is left, so we wish you Yeah. all the best. I'm sure Thank you you'll so be much. jumping around very soon. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you so much. Gunjan. Thank you so much. Thank you, doctor. Okay, Dr. Ambekar, excellent. We really were extremely enlightened with having Gunjan here and sharing detailed study that she went through her surgery. Before I come to the next part, in fact, I want to introduce another guest that we have, who again is the topic that we are going to carry on with. We have Sunita Khanna ji, who's joining us here. She too went through a 3D laparoscopic surgery, and this time this was for hernia. And hernia is the other topic that we're going to discuss, Doc. But I would like to actually hear first from Sunita ji. Welcome to the show, ma'am. You're on mute. Let me just unmute you. Okay, 1 second. You'll have to use your own handset to. Yeah, she's unmuted. No? Not yet. Okay. We'll just wait till she figures this out. Sunita, unmute. Can you just chat it out somewhere on the Zoom? Am I audible now? Yes, yeah, now you're unmuted. Yes. Yeah. Welcome to the program. Welcome, Sunita. Thank you so much. Good evening, Vaishali ji. Good evening, Doc. Nice to see you. This is a very good platform, Vaishali. I'm interrupting. She loves to talk. Instead of a standard 10 questionnaire a patient gives me, she was on a gun roll of 150 questions pre-op, 15 questions just before the surgery, wow. 10 questions after the surgery. But she's a wonderful patient.
compliance, and she's like a little kid at times. You got to, datify her and be strict with her, but she has been a very, very compliant, wonderful patient, I must say. Excellent. And we hear that she also went through her surgery fairly recently. Yes, yes. So, सुनीता जी प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी सर्जरी, आपका प्रॉब्लम कैसे प्रेजेंट हुआ और what made you take the decision of going ahead with the 3D laparoscopic surgery? So thank you for having me over, and my great appreciation for the doctor calling me a good patient. I'm sure my family and the staff and everybody will not agree. I'm a terrible patient. In my mid-50s, think I know it all. And the whole thing is I've been living with this from last about 6 years, with this hernia, in complete denial, absolute denial. And I didn't have any major problem. I didn't have any pain, except for a little obstructive bowel movements and things like that. I didn't have any major issue. So the real impact of what he has done has made me go through a surgery with very little discomfort, which is a very, very high point in his favor. You go to a surgeon, you go to a doctor for very big issues in life. You hear of cancer and this and that. And I went because I had to go on a road journey with my husband for a friend's 25th anniversary. And I just couldn't take the road journey. I could take flights, I could take, small trips here and there, but 5-6 hours of road journey was not possible. So my husband, my daughters gave me help and said, you need to get this sorted. So, and coincidentally, so I went across, and the Mulchan people are relatives, but the thing about Mulchan today is that they're so professional, at least I know them today now personally. They just told me, go ahead, go to the OPD. And without even any question, he just said, go to Dr. Sachin. I said, he's Sachin Tendulkar. So he said, yeah, he's kind of Sachin Tendulkar of the, the hernia, this whole department. And I just messaged him, went to the OPD, messaged, very professional. The whole conduct of the hospital, the staff, went across, met him. First met his junior, and I thought he was Dr. Sachin. They're all so confident, and they're so much in sync with each other. And then he called him over, and then he spoke to me, and I said, okay. I mean, I didn't expect it. He said, Parso aa jao. And I said, Nini, Parso nahi. I mean, this is like a bit too much to absorb, And incidentally, my father-in-law had gone through a surgery and he's 84. So I was a little ashamed that, at 55, I'm sitting and crying. Why am I doing this? But when he talked to me, I just came back home, told my husband, I said, listen, I met this very intelligent and very swift talking doctor, but I'm feeling very confident. And I think we should go ahead. And I didn't go to any of my known doctors. That's the confidence you want to be inspired with, It's just like when you spoke with me and you said you talk. Normally, I would not, though he says I like to talk a lot. But, the tendency is you don't want to share this kind of experience because it's a surgery. You're embarrassed. I'm embarrassed. I was living with this lump. So just a little disagreement. I couldn't go for a swim. And I thought, okay, now I'm in mid-50s. It really doesn't matter. And you kind of live with it. And to take a patient out of that state of mind. And so you don't need to live with this. And he's very witty with his words. Huh? You'll get an Aishwarya Rai kind of flat cut. And, I said, but, even at the end of it, when I just one day before I went and I said, acha, ab 4 din baad aa rahe hain. So he said, ki, haan, theek hai. I said, abhi bhi, can I still think about it? So you want a parachute or you want to stand on the cliff? I said, no, I want a parachute. So the psyche to convince a woman in her mid-50s and everything was going fine. I have no great stories to tell you that, I had a lot of problem. I was living with in-laws. I have 2 grown-up daughters, both very smart. We chose a weekend. We did it very, very comfortably. A smooth journey throughout. So 1 second, Sunita, what I wanted to, interrupt and tell, especially for people who are logged in right now, hernia is basically a protrusion of the abdomen. जो hernia है एक muscle defect है basically. और उससे जो अंदर की आंत है या जो intestines हैं वो बाहर आ जाती हैं. It forms a deformity on the abdomen, giving a disfigurement of the whole abdomen. Which is so only pain starts when something gets very complicated in the hernia. Intestines फंस जाती हैं, निकल नहीं रही हैं, तो pain शुरू होता है, which is an emergency situation. And as Sunita ji has said, she's never had major complaints except for that deformity. Now that deformity is one thing which either you choose to live with, and rightly said, being in our society, you're embarrassed, you keep thinking about it, karu, nahi karu. And the only thing which I wanted her to
Actually, actually what I thought about her was that she likes to live her life the way she came, she talked. I could make out the feel that, she's a very, jovial person. She wants to do everything in life. So barring this thing, this should not hinder all the other things in her life. So all I thought that what I need to promise her that whatever you've been restricting and not doing because of this, you will be able to do it without any second thoughts. So that's what the hernia was all about in Sunita ji's case. And so the experience was fabulous. Yeah, hernia का आपको जो problem शुरू हुआ, क्या आपको पता था आपको ये problem है? How did the problem present, and where and when did you come to know that it was a hernia? It was a hernia before you actually. So that's how life is, I got this because of a wrong diagnosis from another doctor. And I'd been living with it for a very long time, and I'd been doing alternate therapies and things like that. My physician, my pulmonologist, everybody told me that please go and get this done before it becomes serious. Right now it's cosmetic, but later on it becomes serious. But I'd been living with it forever, and they said whenever it happens, you can do it. And I was just not inclined to do it. And I just went to him across, and then I knew that I was living with a hernia. I was in denial. I still am in denial. I still feel that he's just done something, though he showed me the video and stuff like that. My daughter keeps telling me, God, don't you? I said I was semi-conscious. I have no idea. But the whole experience has been marvelous, because the day we went, and very swift. We went at 8:30 in the morning. 10:30, I was in the OT. The anesthetist was fantastic. The doc was very confident. They all just, it was like a party. You just walked in. Before I knew it, I was out. And then I was back in the recovery room. They put me back in the room in the evening. I was in pain for a day. That night was a little tough. And he chose, the thing about the whole team was, especially Dr. Sachin, that he said, I want you to be there. I don't want you to get up the next morning and then give me a call in emergency. So the right amount of professional touch with that little personal, sense of, that you'll be taken care of. We live in a big city with a big hospital. You're always wondering, that little aloofness that, I didn't feel that at all. And the next morning I was fine. And by 10:30, 11:30, he came, he removed whatever he had to do. Then he put a bandage on me, he gave me the whole, and everybody remembers you have to wear that abdominal binder for 3 weeks, and you will not do this and you will not do that. And I was so petrified. 4 days later, I went to him, he removed my bandages. After, he said, you don't even need to come to me. You can just go to the, regular OT room and get the stitches removed. But the impact that a person can leave on you, a doctor can be a godman and can be the devil. They're gifted with, with life. They are the ones who really give you your life. They can take away your happiness. Like you said, midlife is not an embarrassment. You just live with it. It's not a big deal. I mean, you hid yourself, you wore clothes appropriately, and you did what you did, how you have to. But today, I mean, I can say 3 weeks later, I'm a changed person. I've got the zing back in my life. I'm pursuing my career. It's a very holistic thing that he's done. And it's the right timing. And I'm really blessed. And I'm really grateful to him and the whole team of Moolchand, and especially Mr. Vibhu, who really kind of put us on to him. And thank you very much, ma'am, for having me over in this interview. Thank you, Sunita ji. एक last चीज अगर आप specifically hernia patients को कोई message देना चाहती हैं, because जैसे अभी डॉक्टर ने बोला, आपने भी बोला कि आप शायद जिंदगी भर उसके साथ अगर वो पेन नहीं दे रहा तो आप रह सकते हैं उसके साथ. But yeah, I had gone to Mahajan for the sonogram, and she had said you can live with a belt. Yeah, but आपके personal experience के बाद, what would you suggest? Go for it, 100% go for it. Go to Sachin Tendulkar of the hernia department and get your stuff done, Dr. Ambekar, and really, they're very, very good and clean and very professional. The whole experience has been marvelous. I just walked in and walked out. Literally walked in and walked out. Thank you. Thank you so much. My compliments to you and all the very best. Lots of progress. Bye, Sunita. Bye. Thank you so very much. Thank you so much. अपने time निकाला हमसे बात करी. Thank you so much, ma'am. Thank you for having me over. And thank you, and get well soon for your recovery. I'm well, ma'am. I'm well. I can stand up and show you. As she says, Aishwarya Rai. The next cricket match is between you and Sachin Tendulkar. Yeah. Yeah, true. Thank you ever so much. Okay, coming back, Doc, we want to talk a little more about hernia and how it manifests, treatment options, वगैरह वगैरह. तो थोड़ा सा बताइए hernia क्यों होता है, किन लोगों को होता है? जी,
सो विशाली जी, ऐसा है, हर्निया इज अ मैनिफेस्टेशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होती हैं, जो पेट का प्रेशर होता है और जो मसल वीकनेस होती है। ये दोनों जो हैं ये बेसिकली कंबाइन करके हर्निया को डेवलप करती हैं। जब आपके पेट के अंदरूनी प्रेशर की वजह से मसल का कोई भी डिफेक्ट या मामूली सा मसल स्ट्रेच या डिफेक्ट हो जाए, उस चीज के थ्रू एक हर्निया डेवलप होती है। हर्निया एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब हर्निएशन कमिंग थ्रू, मतलब समथिंग कमिंग थ्रू a part is called herniation. तो जनरली ये पाया जाता है जो बहुत ओबीस लोग हैं, जिनमें एब्डोमेन का जो स्ट्रक्चर है, जो गोलाई है वो खत्म हो जाती है, जो मसल है वो टोन खत्म हो जाती है। कुछ हद तक प्रेगनेंसी जो पेट फूल जाता है, मल्टीपल सर्जरीज जिनकी हो जाती हैं, मसल वीकनेस आ जाता है। आदमियों में इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं उसे, जो ग्रॉइन एरिया के आसपास होता है। जो बड़े लंबे पुरुष हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग वेट उठाते हैं, लेबरर्स हैं, या आप जिम बिना बेल्ट के कर रहे हो, या कोई भी मशीनरी टूल्स बहुत हैवी वेट्स उठा रहे हैं और आपकी मसल वीकनेस हो रही है, तो इन सारे एब्डोमेन के मसल्स के थ्रू हर्निया निकलती है। इसे हर्निया कहते हैं, जो एक प्रोट्रूजन है, वीकनेस है मसल की। और जो कंटेंट होता है इस हर्निया का, ये पेट का कंटेंट होता है। जो अंदर पेट में इंटेस्टीन्स होती है हमारी, पेट का फैट या ओमेंटम बोलते हैं, वो इस हर्निया के थ्रू निकलता है। हर्निया के बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। बेसिकली हर्निया टेक्निकल बोलने के लिए हर्निया है, बट 8 और 9 10 प्रकार के हर्निया है। फीमेल्स के लिए अलग, मेल में भी अलग होते हैं, और हर्निया के ग्रेड स्टेजेस भी अलग होते हैं। और कुछ हर्निया ऐसे हैं जो कभी भी जानलेवा भी होती हैं, इनफैक्ट, बिकॉज दे बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। जो इंटेस्टीन्स हैं वो पेट के बाहर लटक रही है और अंदर नहीं जा रही, तो हमें इंटेस्टीन्स को भी काटना पड़ता है ऐसे सर्जरीज। सो नाउ आपने जो बताया कि हर्निया का टिपिकली जब तक पेन नहीं होता तो लोग रह सकते हैं, लेकिन इमीडिएट एडवाइस एज अ डॉक्टर टू अ पेशेंट, इवन जिनको पेन नहीं है, आप क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन देते जी हैं? देखिए, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट फॉर अ हर्निया पेशेंट इज नेवर डिले। चाहे कोई फिजिशियन बोले, चाहे रिलेटिव्स बोले, हर्निया एक ऐसी चीज है, आप जितना छोड़ेंगे उनको, वो हर्निया उतना बड़ा डिफेक्ट होता है। बेसिकली डिफेक्ट, मान लो 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, जैसे जैसे टाइम और बढ़ता जाता है, तो ये जो हर्निया डिफेक्ट है बड़ा हो जाता है। इस बड़े हर्निया के थ्रू इंटेस्टीन्स बाहर आ जाती हैं, एंड दे कैन कॉम्प्लिकेट द होल लाइफ फॉर एवर to be this thing. So pain is not the issue. Pain is the worst symptom which you will wait for. इसमें पेन होता नहीं है। पेन तब होता है जब ये हर्निया बहुत हद तक कॉम्प्लिकेट हो गई है, तो पेन होता है। तो हम उस हद तक ना वेट करें कि जब तक वो लास्ट स्टेज में कॉम्प्लिकेट होकर पेन हो जाए। हर्निया डेवलप होने के लिए एक बल्ज फील होती है, आपको एक उभार फील होता है स्टमक के ऊपर या ग्रॉइन एरिया में, तो आप तुरंत एक अपने फिजिशियन को जाके दिखाएं, या सर्जन जो भी है उनको दिखा दें, ताकि उनको अगर लगे, एक आशंका है आपको कि मेरा ये आकार जो है, जो पेट का आकार है, वो उसमें कुछ उभरा हुआ है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो आप दिखा दें। फिजिशियन अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें हर्निया आएगा। उसके बाद हर्निया का स्पेशलिस्ट सर्जन ही होता है, ना कि फिजिशियन। इसकी कोई दवाई नहीं होती, इसके कोई एक्सरसाइजेस नहीं होते। ये जो बेल्ट आते हैं इनको भी ना पहने, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई योग एक्सरसाइज नहीं होता मसल को टाइट करने के लिए। वो जो एक बार हर्निया डेवलप हुआ है वो हमेशा ही रहेगा, और वो स्टेजेस में जाके बढ़ता है। डॉक, ये बताइए, आपने कल हम जब बातचीत कर रहे थे तो प्रेगनेंसी में काफ़ी हर्निया के चांसेस भी होते हैं, बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट ओबेसिटी वगैरह वगैरह। तो प्रेगनेंसी में जब इन द मिडल ऑफ द प्रेगनेंसी आ जाता है, तो इट्स समथिंग दैट ऑब्वियसली एनी मदर वुड बी एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट अबाउट। तो इसमें क्या किया जाता है? So basically, pregnancy में अगर hernia develop होता है, it is not interfering with your pregnancy, it is not life threatening, और छोटा सा hernia है, वो generally pregnancy वाले जो hernias हैं वो नाभि में ही निकलते हैं, इसे umbilical hernia कहते हैं, जो protrusion से आता है। So by and large it doesn't interfere with your pregnancy. बहुत rarely, कभी-कभी अगर जैसे multiple cesareans हो गए हों, 2 cesarean हो गए हों और आप pregnant हो, तो उस समय cesarean के scar में hernia अगर आता है, intestines आती हैं, तो बहुत रेयरली हम ऑपरेट करते हैं, वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जिसमें हम हर्निया को ऊपर ही ऊपर, हम बिना लैप्रोस्कोपी किए, हम ऊपर ही ऊपर इस हर्निया को डिफेक्ट को वो ठीक कर देते हैं। बट एज आई सेड, इट्स अ वेरी रेयर प्रेजेंटेशन ऑफ हर्निया सर्जरी एंड प्रेगनेंसी. Ideally we would tell the patient to
finish off with the pregnancy, get healthy in a month's time, and then we can do the surgery again. क्या हर्निया उसी जगह पे दोबारा आ सकता है या किसी और जी, पार्ट ऑफ द बॉडी बहुत में? बहुत सारे ये क्वेश्चंस आपके बहुत वैलिड हैं, क्योंकि मैंने कुछ कुछ सर्जरीज ऐसे की हैं जो हम रेकरेंट या रीडू हर्निया कहते हैं. Not pointing fingers at anybody, but the technique which you use, the type of mesh you use, and what kind of expertise you are doing, and how relatively trained you are in a hernia surgery is one of the biggest aspect for the patient. So मान लीजिए अगर कुछ surgeries not in the urban scenario, maybe from a village scenario, from a PHC scenario, from a small town, tier 3 town scenario, if the surgery has been done and the hernia has been repaired. And I get a lot of patients who come from Patna, I get from Allahabad, from Ahmedabad and Delhi NCR also, and sometimes from the urban hospitals that we've undergone the surgery, but after 6 months, I can still feel the bulge and, the hernia is causing a problem. So yes, it can recur depending on the technique and the expertise of the surgeon, but the recurrence it is there. It is predominantly there for about 2% of the chance. डॉक्टर अंबेकर, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस की 3D लैप्रोस्कोपिक की ही अगर बात दोबारा करें, और आपने शुरू में थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, किस किस टाइप की सर्जरीज कर सकते हैं इसमें? यू सेड दैट इट इज अप टू द डॉक्टर, देयर एक्सपर्टीज एंड देयर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो कहाँ तक कर सकते हैं. तो स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं तो if there are growths in the body, in the abdomen area or elsewhere, which normally you would do a traditional and conventional surgery to pull them out, to cut them open, would they qualify? You are also a specialist in bariatric surgery. So where weight loss surgeries are concerned, etc., would this qualify? So if you can just talk about these few aspects of 3D laparoscopic surgery once. So 3D surgery, again, as I said, Vaishali ji, 3D laparoscopy, again, is a moderator dependent. It depends on the surgeon's comfortability and the zone of his technique and his expertise and his learning curve. So I have done some complex hernias with 3D laparoscopy. Some surgeons are not comfortable to see the three-dimensional view of the hernia. Bariatric surgery, again, can be used for 3D laparoscopy. Not much of the outcome would be there as compared to the time per se. So again, the benefit has to be weighed, the pros and cons. Kiss surgery is beneficial for this patient. It is subjective. And whether the time lapse for such patient is an important part of the whole surgery. So giving it as an umbrella academy, I think 3D laparoscopy can be used for most of the conventional laparoscopic surgeries, provided you are confident on how it is going to benefit the patient vis-a-vis to the conventional surgeries. So then would you recommend on the signing off note, Dr. Ambekar, that अगर कोई पेशेंट किसी सर्जरी के लिए जा रहा है, अपने मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, हम वर्ड यूज कर रहे हैं, बट कोई भी सर्जरी के लिए जा रहा है, since patients and the common man don't know, would you then advise them that always ask your doctor or surgeon कि इस वाले सर्जरी में 3D okay. So I think it's very important to spread out the information and educate your patient. I think I do it in most of my patients, whether it's 2D or 3D laparoscopy. I would tell them the benefit. I would explain to them what is the use of that time limit, whether it is good for him, not good for him. As I said, again, subjective to every patient. You cannot just categorize everybody in 3D just because you know 3D. If it is going to be beneficial to the patient, again, I'm reiterating, anything which benefits the patient, that is the surgery which should be the choice for the surgeon, rather than just going with theoretical knowledge or statistics per se. But yes, when I know that this is a distinct advantage, there's going to be a dramatic effect, I definitely tell the patient कि आप conventional laparoscopy ना करके 3D laparoscopy करवा लें, उससे ज़्यादा better. Okay, Dr. Ambekar, one last question to do with the cost of surgery, and without even putting in the numbers, because obviously every hospital... There's no difference. There's no difference. There's no difference. It would be at par with the conventional laparoscopic surgery. Excellent. Okay. Dr. Ambekar, excellent discussion with you. It has really, I opened up my eyes, and I'm already thinking of, who else I can suggest this form of surgery to. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you, Vaishali. Thank you so much for being a wonderful host, as always, and always putting in the right question at the right time. Thank you. It has really made my day as well. And you really, like Sunita ji said, you're great at making the day for women around you. That's probably why they'll keep coming back to you.
I All hope the so. best to you and Thank you. to all your patients who are coming to you. Thank you very much for joining us today. Thank you. I'm signing off. Thank you so much. Bye bye. Bye.